You all welcome to the BC Academy. Today we will perform the question number 8. The question number 8 is, a submarine is a position 1300 meter below the sea level. तो हम ग्राफ से समझते हैं, ये डायग्राम से समझेंगे ये सन कैसा है. एक सबमरीन है. सबमरीन होती है जो पानी के अंदर रहती है, जो हमें नाव या बोट की तरह नहीं दिखती, राइट? As we had learned in the geography that the sea level is also always considered as a zero. Sea level को जीरो माना जाता है जहां से, तो ये है 0 मीटर. यहाँ से अगर हम कंसिडर करेंगे ये 0 मीटर जहां से सी चालू हो रहा है. द सबमरीन का पोजीशन क्या है? नीचे है सबमरीन, बिलो द सी लेवल 1300. यहाँ पे समवेयर इज अ सबमरीन बिलो द सी लेवल 1300 मीटर. अभी क्या हुआ? If it is ascended 450 meter, what will be its position? Ascended यानी ऊपर जाना. This is ascending upward, descending downward. This is ascending, this is descending. Okay? So जो शिप है या सबमरीन है वो कहाँ गई? ऊपर की तरफ गई. कितना मीटर ऊपर गई है? It's moved 450 मीटर. कितना ऊपर गई? 450 मीटर ऊपर गई. Now it's went here somewhere. Okay? So what will its new position? अभी ये सबमरीन है, इसकी न्यू पोजीशन क्या है? ओके, चलो परफॉर्म दिस अप. इनिशियल पोजीशन ऑफ सबमरीन. इनिशियल यानी स्टार्टिंग पोजीशन जहां पे सबमरीन रुकी थी. इनिशियल पोजीशन ऑफ सबमरीन वाज 1300 मीटर बिलो द सी. The new position of submarine is now new position of submarine is 450 meter. 450 meter. अभी वो ऊपर की तरफ आई, यानी डिस्टेंस कम हो गया फ्रॉम द सी लेवल. तो वी विल परफॉर्म डिडक्शन. डिस्टेंस बढ़ेगा, एडिशन. डिस्टेंस कम होगा सी लेवल से, तो डिडक्शन. ओके, सो now final position of submarine. अभी फाइनल पोजीशन क्या है? 0 - 0 0. 0 में से 5 नहीं जाता. we have to carry 2 cut 10. 10 में से 5 गया 5. 2 में से 4 नहीं जाएगा, इसको कट किया, यहाँ 12 हो गया. 12 में से 4 गया, it will be the 850 meter. What question asking? What will be its new position? Its new position. So, new position of submarine is 850 meter below the sea level. The position of the submarine is 850 meter below the sea. Below the sea. Now we will start with the question number 9. A Roman civilization began in 509 BC and ended in the 476 AD. How long did the Roman civilization last? बुक में हमें दिया गया है कि 0 हमें कंसिडर नहीं करना है. 0 ईयर हमको कंसिडर नहीं करना है. Let's understand the concept of the BC and AD. What is the concept of BC and AD? देखो, if we say the year is started in the first year, this is the first year. तो before Christ, that means the before birth of Jesus Christ, हम BC लिखते हैं, before Christ, okay? और after, that is the AD stand for Anno Domini, यानी after Christ, okay? तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, they have asked us that the 509 and 476 AD में का डिफरेंस क्या है? ये समझ में आया?
First year, we have started from the, not from the 0 year, we have started with the first year. BC stand for the before Christ, AD stand for the Anno Domini, यानी after Christ. तो हमें पूछा गया है 509 BC and 776 AD, ये दोनों ईयर टोटल डिफरेंस कितने ईयर्स होते हैं? समझ में आया क्वेश्चन? रोमन civilization began in 509 BC to 1 BC. The period of the BC, that is a before Christ, is from 1 to 509. हमें पता है जो बिफोर क्राइस्ट का एरा है वो उल्टा लिखा जाता है. It not start from the 1, it will start from the 509 to 1. Okay, so how many years? 509 years. Okay, now Roman civilization end, its begin and its end. Ended. So रोमन सिविलाइजेशन कब तक लास्ट हुआ था? फ्रॉम 1st AD to 476 AD. That is 476 years. देखो, रोमन सिविलाइजेशन बिगिन हुआ था in the era of the Christ 509 to 1st BC, that is a year 509 years, and Roman civilization ate in the AD decade, that is from the 1 to the 476 AD. So total, they had asked how many years the Roman civilization lasts. So we want a total year that the Roman civilization. So we will add the both era 9 and 6 15, 5 carry 1, 1 and 7 8, 5 and 4 9. So Roman civilization last for 985 years. Let's start with the question number 10. It's in Srinagar, the temperature was 2 degrees Celsius in the afternoon on the particular day. What was the temperature during the night? It is further dropped 5 degrees Celsius. समझिए सर, हम ये सब नंबर लाइन से समझेंगे. ये नंबर लाइन है जो हमें टेम्परेचर इंडिकेट कर रही है. दिस इज 0 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर, 2 डिग्री टेम्परेचर, या -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री and -4 degree. Srinagar में, in the Srinagar, temperature was 2 degree Celsius in the afternoon. Afternoon में temperature कितना था? 2 degree Celsius in the afternoon. And further what happens? Afternoon on a particular day. During the night में it's drop at 5 degree Celsius. 5 degree कम हो गया. As we know on the number line, जब कोई भी चीज घटती है या कम होती है तो we move toward the left. तो 5 डिग्री कम होगा, so we will move towards the left. So 5 place towards the left. 1, 2, 3, 4 and 5. What will be the temperature at night? 3 degree Celsius. Okay? This is see. The temperature at the afternoon 2 degrees Celsius. Temperature at night dropped by the 5 degrees Celsius. So temperature will be, what is the question? What was the temperature? So temperature will be 2 degrees Celsius minus 5 degrees Celsius. That is a -3 degrees Celsius. Question number 11. The same question in the textbook is question number 8. We have already performed that. Same question. In that question we have said ascending. In this question only difference is the descending. A submarine is a position 1050 meters below the sea level. एक सबमरीन है जो कि सी लेवल में 1050 किलोमीटर नीचे है.
If it is descended 300 मीटर, वो डिसेंडेड हो गई यानी वो और नीचे चली गई, वो सबमरीन और नीचे चली गई. हमने उसमें असेंडेड किया था पहले सब में, ये सब में लिया है उन्होंने डिसेंडेड किया यानी और 300 सेंटीमीटर नीचे चली गई. What will be its new position? So first position, that is the starting position or the initial position of the submarine was 150. Initial position of submarine is equal to 1050 meter. New position of submarine 300 मीटर. नाउ सी, अभी वो और डेप्थ में चली गई यानी उसका सी लेवल से जो डिस्टेंस था वो क्या हो गया और बढ़ गया. सो वी शुड ऐड दिस. फाइनल पोजीशन ऑफ सबमरीन is 00050503310 meter. Therefore, what the question asking? What will be the new position of submarine? So, new position of submarine is 1350 meter below the sea. Got it?